Rahim. Assalamu alaikum. Hope students you are all fine. आज का जो लेसन है ये मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जो कि पास नहीं होते हैं इंग्लिश में और फिर दे हैव दिस लो कॉन्फिडेंस, दे हैव दिस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड dilemmas and these questions why I am unable to fail and majority case में students ये भी कहते हुए नज़र आते हैं English बहुत मुश्किल है, it's unable to, we are not able to pass it. Actually in this lesson if you are feeling all those problems and conflicts in your mind and you are feeling low self-confidence and low self-esteem, this lesson will going to be inshallah a very great help for you. इस lesson में आप वो तमाम tips देखेंगे जो कि आपको सप्लीमेंट्री में अपीयर होने के लिए ज़रूरी हैं. जी स्टूडेंट्स, नंबर 1, एक्सेप्ट योर failure is not always a sign of dullness. Of course, the students who fail are not always dull students. The students who are unable to pass the paper are not always the students who are nalaik. Please keep this thing in your mind and take away this wrong notion. The people around you and the people, even if the teachers who are listening to me, the parents who are listening to me, please do not make your student feel low confident and do not comment such type of pass such type of comments that make the students feel that they are dull. Students' failure is not always a sign of dullness. You must be brave enough to accept your failure and do not always think that failure is a bad thing. Failures are the stepping stones towards the success, the definite success. Yes, the thing that you need to do is to accept your failures and try to brood over, to overcome those problems, those frustrations, those confusions that comes in your way while you are not able to pass. Yes, that is very a thing you should do. Number 2 is know your weak areas. Of course, that is the most important thing. When you have tried to accepted your failure, it doesn't mean that you should accept, yes, I need to do, I was failed because I was a dull student, I can't do it. No. You need to approach your problem with a positive mindset, and that is why I was not able to pass this paper, this test. Had I not that mental ability and capability, if I had, where was the problem? So you should try to find out the weak areas. Your weak areas might be that you did not complete your task in time, in the paper or before paper. Your weak area might be you did not know exactly what was the paper like. You exactly did not know about the paper pattern. You exactly did not know about those weak points due to which you reduce your marks. You just overtly rely on one professor and what he or she told you. You just focused on it blindly. You should know about those weak areas due to which the students are unable to pass. That is the very important technique if you want to improve. If you have done, for example, if you are, I want to cook a bread, I know that मेरी रोटी क्यों नहीं ठीक बनती, क्या मैं आटा नहीं सही गूंथती या मैं रोटी को अच्छे तरीके से डालती हैं, क्या है, मतलब एक चीज़ को डिफरेंट टेक्निक्स के साथ किया जाता है, तो हर टेक्निक में एक स्पेसिफिक टेक्निक डिमांड की जाती है. सो आपने देखना है राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रेजेंटेशन तो नहीं ख़राब, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हैव, क्या आपके क्वेश्चन की लेंथ तो नहीं छोटी होती, क्या उसमें ग्रामर की उसकी मिस्टेक्स तो नहीं होती, स्पेलिंग की, क्या आपकी राइटिंग पैराग्राफ फॉर्म्स में नहीं होती, क्या आप उसमें हेडिंग्स तो पुट नहीं करते, आपका एंडिंग ठीक होती है, स्टार्टिंग ठीक होती है. आपने ये चीज़ सारी देखनी है. अपने वीक एरियाज़ को नोट करें. इसका एक और तरीका भी होता है कि जिन स्टूडेंट्स के टेस्ट ठीक होते हैं, आप अपने प्रोफेसर से कह सकते हैं कि आपको वो टेस्ट दें ताकि आप उनके टेस्टों के साथ अपने टेस्ट को कंपेयर करके देखें. तीसरी चीज़, द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ know your paper pattern and marking standards. But this is the very important technique that you should keep in your mind while you are preparing for the paper of any university. Right? You must keep this thing in your mind that every university have different marking standard. Every university have different criteria to mark your paper.
every teacher. So if your teachers are not marking according to university standards, that can also create a difference, a problem for you. Because if you are doing your tests and your teacher are giving you good marks, but these marks are not according to the university standards, definitely you're gonna suffer it. So you please try to find out the paper pattern first of all. आंखें बंद करके blindly किसी भी एक बुक पे यकीन नहीं करना आपने. कोई there are piles and piles of books that are available in the market, and you must not rely on one book, or you must not rely on one brain. Go and find out the your previous 5 years papers, and then try to find out what exactly is the demand of your paper. If you are serious enough, then you will hit your mark and you will focus. So first of all, you should know the material you are approaching, what are the basic and best possible ways to approach your material, and what are the best possible methodologies to marks to get good marks. These are the most important thing to know and to discuss with your teachers before you go in your paper. So you should there is another very important technique, that you should just go and find out the previous papers and tick and mark the papers that come in your papers most oftenly. And secondly, if you are talking about English B, बहुत से टीचर्स बच्चों को मिसगाइड करती हैं, 5 एसेस पढ़ लेंगे, 10 पढ़ लें, आप पेपर कर लेंगे. जस्ट गो एंड फाइंड आउट कि आपके BA BSc के मार्क के एसेस कैसे आते हैं और क्या वो रिपीट होते हैं. अगर होते हैं तो कौन कौन से एसेस रिपीट होते हैं, और अगर नहीं होते तो फिर आप सेफ कैसे हैं. आपको अपनी ट्रांसलेशन के लिए, अपनी प्रेसिस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए अपने प्रीवियस 5 years के पैटर्न्स को हमेशा जहन में रखना चाहिए. आप किसी भी पेपर के लिए अपेयर हो रहे हैं, और ये बहुत आसान तरीका होता है तैयारी करने का, कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर्स को देख लें और फिर उसके मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशन को वहाँ से टिक एंड मार्क करें. और फिर उसके बाद when you have prepared your paper, then just go and give your tests in order to know about कि आपका इतना लिखा हुआ आपको कितने को मार्क्स दिला सकता है. एंड यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द मार्किंग स्टैंडर्ड्स. BSc के बच्चों में अक्सर दूसरे पेपर्स में स्पेलिंग और ग्रामर के एरर से मार्क्स नहीं डिड्यूस होते, जबकि इंग्लिश में वो इन गलतियों से मार्क्स डिड्यूस करते हैं. तो ये स्टूडेंट्स आपने देखना है. नंबर 4 पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस करना है, वो ये है राइट टू द पॉइंट. ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मेजॉरिटी केस में जो टीचर्स होंगे, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स हु ट्राई टू प्रिपेयर इन 1 or 2 months. दे डू नॉट नो हाउ टू राइट टू द पॉइंट. जो क्वेश्चन आ जाए उसमें हर आंसर नहीं लिखा जाता. बहुत सादी सी एग्जांपल है. अगर इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर ऑफ मैथ्स एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड, but you do not divide, you multiply. Answer might be okay, but you will lose your scores. Why? Because you have not attempted your question according to the, you had not written your answer according to the question. तो ये प्रॉब्लम है, ये जो मल्टी एक ऐसे आपको दे देते हैं. मेरी बात को ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स. BSc के में मार्किंग का स्टैंडर्ड ऐसे नहीं होता कि आप कुछ भी लिखाएं और आपको मार्क्स मिल जाएं. आप अपने BA या BSc में इतने फेल होने का रेशो है ही इसलिए कि वट एवर आपके प्रोफेसर्स, आपके टीचर्स, आप और आपकी बुक्स में भी आपको हम याद करवा कर टू दी पॉइंट लिखने के बारे में गाइड नहीं करते. ये बहुत ज़रूरी है. आपको पता हो कि क्वेश्चन में क्या डिमांड किया जा रहा है और उस क्वेश्चन में आपने लिखना क्या है. इफ़ यू डू नॉट राइट टू द पॉइंट, आपका मार्क तो बेशक आपने जितना मर्जी लंबा ऐसे लिखा हुआ है, बहुत अच्छे आपने उसमें कोटेशंस ऐड की हुई हैं, जब सवाल ही पूछा नहीं गया था तो उसका आंसर ही नहीं था, तो आपको मार्क्स कोई कैसे देगा. तो ये बहुत बड़ा मसला होता है स्टूडेंट्स के साथ. ये चीज़ मैं ख़ुद भी जब टेस्ट मार्क करती हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इस वजह से मार्क्स लूज़ करते हैं. They have written very well, they have these personal habits, they are careful to learn, they are very curious to know about their mistakes, they have learned everything by heart, but when they start writing they do not write to the point. So first of all, to the point लिखने में बहुत ज़रूरी. फिर वही बात है, क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को देखें, अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को देखें, उन याद की इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में देखें कि उनमें से कौन सी चीज़ है जो कि इस क्वेश्चन के आंसर में लिखी जाएगी. सो टेक अ लिटिल बिट टाइम टू थिंक what actually is the demand of the question that
So you should try to find out the demand of the question, and then coming to the answer you should write to the point. Answer should hit your question, start से भी और end से भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है इंटरव्यू में भी बच्चे। तो उसके बाद जो अगला और आखिरी हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबर 5 पे, मेक अ वाइज एंड प्रैक्टिकल टाइम टेबल एंड कम्प्लिश इट एट एनी टास्क। अच्छा जी, जो स्टूडेंट्स पास नहीं करते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि उनका जो टाइम टेबल तो वो बना लेते हैं किसी के कहने पर, लेकिन क्या करते हैं बहुत सा टाइम वेस्ट करने के बाद व्हेन दे मेक देयर टाइम टेबल इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, राइट। यू शुड, प्रैक्टिकल टाइम टेबल से मुराद ये है कि क्या ये डूएबल है, जितना को आपके दिन में वर्किंग आवर्स हैं उसमें से आपके पास कितना टाइम है जिसको कि आप स्टडीज़ के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या आपका टाइम टेबल आपके टाइम के मुताबिक अकम्प्लिश होता है। इसकी छोटी सी टिप मैं आपको दूंगी कि आपने अपने टाइम को, अपने अपने मटेरियल को डिवाइड करना है डेली बेस पे, वीकली बेस पे और मंथली बेस पे। जब आप एक दिन का अपना टाइम टेबल अचीव नहीं कर सकते तो नेचुरली आपने फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा कि जो मेरा एक वीक का एक टारगेट है, मैं इस टाइम टेबल को एक वीक के अंदर अपने इस टाइम टेबल को किसी ना किसी तरीके से मैनेज करूँगा कि मैं एक दिन में ज़्यादा पढ़ लूँगा ताकि मुझे पिछला है उसकी कंपनसेशन हो जाए, और एट द एंड ऑफ अ मंथ मैं इतना को कंप्लीट कर चुका हूँगा। और फिर उसको हर सूरत में अकम्प्लिश कीजिए। इसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए होगी, ऑफ कोर्स आपको अपने बहुत सी प्रैक्टिस अपनी मसरूफियात तर्क करनी होंगी। रोज़ाना की बेस पे पढ़ने के वाले बंदे बच्चे कभी भी नहीं इस कंप्लेन का शिकार होते कि वो अपना प्रॉब्लम का शिकार होते कि वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। तो सबसे पहला तो जो है वो ये है कि सब कुछ पढ़ने के बाद एक टाइम टेबल बनाएंगे आप, और उसको किसी हर सूरत में यू विल अकम्प्लिश योर टाइम टेबल। सो दैट वाज द प्रैक्टिकल टिप्स फॉर यू गाइज टू prepare your paper, to get and to pass in your papers. In the end of the day, inshallah, you will outshine. So these are the 5 very important tips. If you like it, just tell me in my comment section so that I continue these type of making these type of videos again and again. So students, सब मेरी तरफ से सब अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।